हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेट लेक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे नितिन। तो ये इनके पास जो कॉल थी ग्रेट लेक्स की पूरी प्रोफाइल बेस थी। तो हम सबसे पहले जानेंगे इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डी डे के दिन में क्या क्या प्रोसेस थे एंड इन कैसे स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नितिन, आप एक बार हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और वर्क एक्स है, आप फ्रेशर हो? हाँ, तो अभी मैं एज ए 3 इयर्स से अभी सिविल डिजाइन इंजीनियर हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड मेरा टेंथ में 9.4 CGPA था, ट्वेल्थ में 89% थी, एंड ग्रेजुएशन में अप्रोक्स 9 CGPA था। हाँ, और अभी 3 इयर्स एज मैं अभी सिविल इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ मुंबई में। दैट मीन्स आपने बीटेक कर रखा है। हाँ, यस, हम तो मैं अभी ग्रेजुएटेड हुआ था 2020 पास आउट इन सिविल इंजीनियर एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है। ठीक है, इस जैसे कि हम बात करने वाले हैं अभी आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि आपकी डेट क्या शेड्यूल हुई थी आपके इंटरव्यू के लिए एंड टाइमिंग क्या थी? तो कभी कैट का एग्जाम 26 नवंबर को ओवर ही हुआ था। मैंने उसी टाइम उसके अप्रोक्स में एक फॉर्म भरा था ग्रेट लेक्स का PGPM प्रोग्राम के लिए। तो मुझे 3rd of December को ही कॉल आ गया था कि लाइक यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। एंड ऑन 5th of December that and like summary of the admission process was scheduled. Then on the 8th of December the PI was scheduled in Bombay. That was offline, but PI round was online. Oh, Okay. that were wet round was online. ओके, तो आपका वेट ऑनलाइन हुआ था और जो आपका पीआई था वो आपका हम्म। ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो आपका वेट 5 ऑफ दिसंबर को शेड्यूल हुआ था, तो उस दिन मतलब टॉपिक क्या था आपका, किस टॉपिक पे था पूरा वेट? वैट का टॉपिक था एथिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ठीक है। मतलब तो इसके लिए हम लोगों को 25 मिनट्स दिए थे। एंड इसी में हमें लिखना 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स का हमें पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, तो ये 5th को आपका वेट कंप्लीट हो गया, फिर आपको 8th के दिन आपको फिजिकली वहां जाना था, आपको इंटरव्यू देना था। तो आप जब आप वहां पहुंचे तो कितनी देर आपको वेट करना पड़ा आपके प्रोसेस के लिए? हाँ, तो रिपोर्टिंग टाइम एक्चुअल में उनका 2 PM का था। तो मतलब वहाँ पहुँच से ही जस्ट स्टार्टिंग में जाके डॉक्यूमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तो उसमें 20 to 25 मिनट्स लगे। देन इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट complete like document verification, PI was like we were allotted to some panel. ठीक है। स्टार्ट हो गया था, तो मतलब इमीडिएट ऐसा कुछ वेट नहीं करना पड़ा था। 20 to 25 मिनट्स के अंदर स्टार्ट हो गया था आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हुए वो हार्ड कॉपी चेक कर रहे थे या सॉफ्ट कॉपी भी मतलब एप्लीकेबल थी? हाँ, एक्चुअल में उस टाइम मेरे पास भी उस टाइम सभी हार्ड कॉपी नहीं थे, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, रीजन दिया उनको, वैलिडेशन था। तो उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, यू विल अपडेट ऑन द पोर्टल। तो ऐसा उन्होंने मतलब उस टाइम ज्यादा डिमांड वगैरह नहीं की। ठीक है, तो फिर जब आपका पीआई स्टार्ट हुआ तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? हाँ, तो दो पैनलिस्ट थे, दोनों मेल ही थे। एंड दे वर बोथ लेट इन देयर 40s। तो एक पैनलिस्ट तो बहुत स्वीट थे, एक पैनलिस्ट ने बहुत ग्रिल किया मुझे। तो जो इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पूछा कि हाउ हाउ वाज योर कैट बैंड, लाइक हाउ मच परसेंटाइल डू यू एक्सपेक्ट। सो उस टाइम तक अभी कैट का कुछ आई थिंक रिस्पॉन्स शीट आ गया था। हाँ, तो रिस्पॉन्स शीट आ गया था, तो उसके बेसिस पे मैंने जो स्कोर था अपना बताया कि लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग this score. So they were like, okay, you did great, and now you were like expecting a good policy मैंने कहा yes। तो स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि सो यू हैव पास्ड आउट इन, यू हैव ग्रेजुएटेड इन July 2020, but you have joined in your company in February 2021. So what did you do in those 6 months? Like why there is a 6 months gap in your profile? So I gave them a reason like my placement was my date of joining was delayed because of the COVID pandemic. So then they asked me, what have you done in those 6 months? So I answered that, and then there are some like more willing on this 6 months, like you can do that, these things, those things, etc. Then they were like, you have done civil engineering, so tell me what is how many yards are there in the
100 square feet. So I have answered that question, and then they were like more into the dimensions scheme. And in the last, they asked me uh, how many meter squares are there in the acre. So all of that questions was like responsible. So my answer was for the 6 months was like I have interested in architecture, so I was practicing 3D modeling in one software. So then they asked me like, what are the types of architecture you are interested in, and what is the keen specialty you are being very curious about the Mumbai architecture. So then there was like some grilling on that part. After that, they come to the basic HR questions like what are your strengths, what are your weakness. So I tell them that these are my strengths, these are my weakness. Then they ask me why do you want to do MBA? So at that time my answer was not that much clear and not much structured. So they were consistently like, so you want money, that's why you want to come to MBA. That is all that. So they were consistently want me to say like you need a good placement now. So that's why only this is the reason that you now come to the MBA. So there was some wailing on that by MBA part also. Uh, After that, they come to the like my answer was related to project management in YMBA. So they come to the project management part. Like what are the techniques of the project management? Who is your guru? Whom you follow for the project management part? So I answered both these questions. Uh, then they come. Then they again come to the part where I have mentioned my weakness. Like so, they are telling me like, how are you overcoming that weakness, that particular one weakness. So I was like, I am slightly inclining towards more of a spirituality and meditation part. Then they are asking like, no, meditation is like nothing will happen if you follow meditation. You have to take some real action. And but I was strict towards the meditation part. Like my elders have and teachers have also advised me for that. And my role model is also following this technique, this meditation technique, and the result is also very in favor of him. So I was very confident in meditation part. Then they come to the current affairs part. Like at that time, I know that Rajasthan election was there. As actually I belongs to Rajasthan, so they were asking me like, who will be the next CM, and what do you think about the result of the election? Are you happy with that or not? Like, who would you choose if you currently have to? So then I was telling them about the pros and cons of the current government and what will be the greater benefit if BJP will be elected. So that part was in that direction. Then in the end, they were like, "Can you tell me what is the creative side of yours? Like, can you show me some more of your creative side?" So then I came to the hobbies. Like I am a chess player and I am a fond of architecture and I am also good in sketching. So these reflects my creative side. So there were no questions asked. Uh, and suddenly the second panelist, he suddenly asked me one surprise question like, but can you tell me, Nitin, what is the definition of science? I was completely shocked at that time. Like, how can you ask such a abstract topic? So I asked him 1 minute. Like, I want to think of it for 1 minute. Then the definition which I gave him was inclined towards more towards physics, chemistry, all that perspective. Then he asked me, so as per your opinion, social science didn't include in the science? I was like, yeah, it is included, but I am not now. I'm sure how to frame in the one line in the definition. So he was like, okay, you can go. So that was the interview experience which I had. तो अगर मैं इस सारी चीजों को समराइज करूं तो आपकी जॉब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपने वर्क किया है, और थोड़ा बहुत कुछ आपके सिविल हाँ बैकग्राउंड से मतलब रिलेटेड। एज सच हम्म। हाँ एज सच उन्होंने मेरा जॉब से रिलेटेड इतना नहीं पूछा, सिर्फ रोल्स तक पूछ के वो लोग हो गया कि उनका, क्योंकि मेरा थोड़ा फील्ड है वो टेक्निकल बैकग्राउंड में।
तो आई थिंक उनको हम्म। शायद वो रिलेट नहीं कर पाए होंगे हम। तो हम्म। अकेड से थोड़ा मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का जो डायमेंशन वाला है उतना ही पूछा हम लोगों ने, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं। और आपसे बेसिक एचआर क्वेश्चंस एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे आपके फोकस हम्म। किया। एंड उसके बाद ये आपके हम्म। लिए जो टॉपिक दिया आपको, व्हाट इज साइंस। हाँ, what is the definition of science in one line? So I actually now currently remember that that is the specific topic they have asked me. So that was a completely shock for me. सडनली कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया था तो होता है बस। हाँ, वो थोड़ा था उस टाइम तो। हाँ, तो ये जो उसके पूरा अलावा कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं था। ये पूरा प्रोसेस जो था आपका इंटरव्यू का, कितनी देर चला था? हाँ, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स तो था मिनिमम, उतना हो गया ही था। और ये प्रोसेस खत्म होने के बाद इसके बाद भी कुछ था या फिर यहीं पर आपको एग्जिट था? नहीं, बस लाइक इसके बाद उन्होंने पूछा कि लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एंड यू कैन गो। सो खत्म हो ही गया था क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो गया था, तो कुछ था नहीं तो उसके बाद। ठीक है, तो अभी ग्रेट लेक्स का रिजल्ट आ रखा है अभी, या अभी आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का? हाँ, ग्रेट लेक्स का रिजल्ट आ गया था इसका, फरवरी लास्ट वीक में आ गया था। तो आई थिंक 27 या 28 को आ गया था, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता लेकिन लास्ट वीक में था। तो हम्म। उन्होंने बस वही दिया, 1 वीक का टाइम दिया था फीस सबमिट करने के लिए। तो तो अभी मतलब आपने अभी तक तो वो टाइम खत्म हो चुका है। तो आपका कन्वर्ट हो गया है ग्रेट लेक्स? हाँ, कन्वर्ट हो गया मैं अभी ग्रेट लेक्स एंड, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन बट सबसे आई पहले। हैवंट हाँ, बट आई हैवंट एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। ओके ओके, तो आपने सीट छोड़ दी है अपनी जीएलएम की, राइट? GLM, एंड दैट इज फॉर GLM PGPM, दैट इज फॉर लाइक मिनिमम 2 ईयर वर्क एक्स वाला जो है प्रोफाइल उनका, उसके लिए था, जो 1 ईयर का प्रोग्राम है PGPM में। तो नितिन, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड हम्म। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर हम्म। कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।